स्टेप और था, नंबर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट का नहीं था। आई नो व्हाई, क्या छोड़िए, कोई बात नहीं। बोथ ऑफ यू रिमेंबर द 3 फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स? यस और नो, प्लीज टेल मी। अब देख लीजिए एक चीज, वी आर गोइंग टू डिनोट नंबर ऑफ मोल्स as n. Okay, Afaf and Rishita, is this clear? Yes, sir. N means number of moles. ठीक है, so number of moles has 3 formula. Tell me guys. Afaf बताएं, when particle is given. जी Afaf. Sir, I don't remember. You don't remember. So you did not read the notes, right Afaf? Yes, sir. Why? Rishita, do you remember? Yes, sir. Tell me when. देखिए अफाफ, अब बिल्कुल आप प्रॉमिस कीजिए हमें कि यू विल बी रीडिंग द नोट्स डेली। ओके अफाफ? तबीयत वगैरह ठीक है आपकी अफाफ? Yes, sir. बिल्कुल चंगा, कोई दिक्कत नहीं? No, sir. घर में कोई शादी वादी है? No, sir. नहीं, कोई नहीं है। सब कुछ ठीक है, तो फिर पढ़ क्यों नहीं रही हैं आप जी? सब कुछ ठीक है तो पढ़ाई भी तो ठीक होनी चाहिए। पढ़ाई ठीक है अफाफ? हाँ, एक्चुअली स्कूल में बहुत काम दे रहे हैं टीचर्स, उसमें टाइम नहीं मिलता। स्कूल में बहुत काम दे रहे हैं? क्या काम दे रहे I हैं mean स्कूल में? like होमवर्क्स बहुत मिल रहे हैं। क्या हो रहा था होमवर्क में? क्या रहता है जैसे? Notes complete and then some numericals homework. Physics नोट्स कंप्लीट? एक चीज बताइए, ठीक है, सो दिस टीचर इन योर स्कूल वो नोट्स बनवाते हैं या फिर आपको बोलते हैं नोट्स घर में लिखना? क्या होता है? एक बायो के लिए हम खुद नोट्स लिखते हैं and then for physics the teacher gives us the notes. और केमिस्ट्री के लिए? केमिस्ट्री के लिए we don't write notes, like वो पॉइंट्स बोलते हैं तो हम बुक में मार्क लिख लेते हैं। बुक में ही लिख लेते हैं? कॉपी वॉपी है नहीं? है, नोटबुक है for numericals. When she gives some numericals we do it in notebook. अच्छा, बाकी किताब में ही वो स्क्रिबल करा देते हैं, ठीक। तो Yes. उतना तो नहीं हुआ, फिर बायो का ही फिर हुआ लिखने का काम तो ना, है कि नहीं? Yes, बायो का होता है and इंग्लिश का। इंग्लिश का? इंग्लिश का yes. इंग्लिश का क्या ही लोड इतना लेना, ठीक है। एक डू यू नो मार्क ट्वेन? इंग्लिश की बात आई तो हैव यू हर्ड दिस नेम? Yes, I heard this. Who is he? Mark Twain. He's an English author, ठीक है। He once said, I never let school become a barrier to my education. I hope in 11th and 12th standard you will understand very perfectly what he meant by this, because 10th class तक तो लगता है कि स्कूल में पढ़ाई हो रही है, but in 11th and 12th standard you will understand that school becomes a barrier in education, right? Afaf, वही हो रहा है आपके साथ? हाँ Afaf, tell me. Afaf, you get the numericals, फिर numericals का क्या करती हैं आप? इंटरनेट में गूगल करती हैं, फिर उसको छाप देती हैं? I try to do the numericals
ट्राई आया तो मतलब इन द सेंस। अगर नहीं आया तो I'll ask the teachers. अच्छा, गूगल से नहीं छापती हैं आप? नहीं। अच्छा, टीचर फिर बताते हैं, फिर समझ में आता है, तब तो फिर आपका अच्छा स्कूल है। She clears the doubts. अच्छा, तब तो फिर आपका अच्छा स्कूल है। बट यू विल स्लोली अंडरस्टैंड दैट स्कूल दे जनरली बिकम अ बैरियर इन द एजुकेशन। ठीक है, खैर चलिए, अब से आप पढ़िएगा। देखिए, आपको हम एक चीज बताते हैं, उसकी वजह से ना आपका शेड्यूलिंग सही हो जाएगा। यू टाइमर है फोन में आपके पास ना, टाइमर ऑन कीजिए और एक दिन का जो हमने नोट्स लिखा है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, टाइमर ऑन करके पढ़िए। अब देखिए कितना टाइम लग रहा है। इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट्स। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट्स, समथिंग लेस समथिंग मोर, ज्यादा नहीं लगेगा अगर आप नोट्स पढ़ेंगे मेरी, है ना, एक दिन का। सो बाद में कभी अगर आपका दिमाग बोले, जस्ट अ सेकेंड, so next time when your brain will say कि no, you have so much of work, how can you read the notes of coaching and so on, तो आप बोलिएगा कि 5 मिनट लगते हैं सर। कितने मिनट लगते हैं आप? 5 मिनट, ठीक है, इसको टाइमर लगा के बिल्कुल कर दीजिए। चलिए रिशिता बताइए, when number of particle is given, what will be the formula? Given number of particles by 6.022 into 10 raised to 23. गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जी से हम डिनोट कर देते हैं, जी से हम डिनोट करते हैं। चलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख देते हैं आपके लिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय 6.022 into 10 to the power 23. And when mass is given, what is the formula? Given mass by molar mass. Given mass को हम W से ये करेंगे और molar mass को M से करेंगे। By M. W by M. When the volume of gas at its TP is given? Given volume by it How much? 22.4. Yeah, 22.4. ठीक है, तो अफाफ ये आपके नोट्स में लिखी हुई है चीजें या लिखी हुई भी नहीं? You have written this? Yes, sir. Ma'am made a slide. ठीक है, okay, fine. Now write the next topic, concentration terms. The concentration terms that we are going to study is number 1, mass percentage, also given as percentage W by W. Percentage W by W. Second, we'll learn about the volume percentage. It is given by percentage V by V. Then we have mass by volume percentage. This is not 7, okay? बहुत सारे लोगों को ये 7 लगता है, मैं एक बार इसको ठीक से लिख देता हूं. This is percentage. This is given by W by percentage W by V. Fourthly, we'll learn about molality. Then we will learn about mole fraction. And then last, we'll learn about molarity. Molality is shown by small m, mole fraction by this X looking word, X looking letter, but it is known as chi. We pronounce this as chi. And molarity is given by capital M. Please write this down. Let me know once you're done. Yes, Rishita and Afaf done, both of you?
Rishita and Apaf wrote all of these six. Done. Very good. Right, next. Topic डालिए number 1. That is going to be the mass percentage. Write the topic number 1. Mass percentage. In bracket you will write W by W. Now, see the formula. The formula is very easy. Mass percentage. Oh. Concentration terms हमने लिखा दिया. अब थोड़ा सा इसको कट कर लीजिएगा जरा. मास परसेंटेज को कट कर लीजिए प्लीज. ठीक है. पहले लिखा था सोल्यूशन ना. पहले सोल्यूशन पढ़ेंगे तब तो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे. चलिए ठीक है. कंसंट्रेशन टर्म्स आपने लिस्ट लिख लिया. मास परसेंटेज प्लीज काट दी. माय बैड. राइट द टॉपिक solution. What is the solution? The definition you must know. You must have heard this earlier. नहीं या तो कोई बात नहीं. The homogeneous mixture. The homogeneous mixture of two or more substances The homogeneous mixture of two or more substances is called solution. No. So we can have two substances or more than two substances. For example, रूह अफ़ज़ा बनाया आप लोगों ने? Have you made रूह अफ़ज़ा? Paf, have you ever made रूह अफ़ज़ा? Yes, sir. Yes. Now, if you are going to make रूह अफ़ज़ा, रिशिता, आपने बनाया रूह अफ़ज़ा? मैंने मेरी माँ को देखा है बनाने में. देखा बनाते हुए देखा. ठीक है. So in रूह अफ़ज़ा what happens? If you are going to make it, then you have to stir it very well. If you are not going to stir it very well, then what is going to happen? The रूह अफ़ज़ा is going to get accumulated in the bottom. Right, Afaf? Yes. Correct, hai? Now, Yes, sir. if you are going to taste the रूह अफ़ज़ा from the bottom of the glass, it is going to taste different. And if you are going to taste it from the top, है ना? अगर आपने stir नहीं किया सही से, then the taste will be different on the top and it will be different on the bottom. Correct, Afaf? Yes or no? Please tell me. Keep your mic on, please. Rishita and Afaf. Keep your mics on. Yes, sir. Correct. Correct, है ना? अच्छा. This is not a homogeneous mixture. So homogeneous mixture means a good रूह अफ़ज़ा. A good रूह अफ़ज़ा will have the same taste in the top and the bottom. That means you have to stir it very well. And then what is going to happen? The components or the particles of रूह अफ़ज़ा will be evenly spread out. It will be evenly spread out inside the whole container. Inside the whole water molecules, it will be evenly spread out. तो ये evenly spread out को क्या बोलते हैं? Homogeneous. It means evenly spread out. Okay. Now, you are going to learn about binary solutions. What are binary solutions? Please see. Binary solutions. A solution with only two components. And when you are going to have binary solution with two components, the two components is going to be, one will be solvent. We are going to denote all the solvent as A in general. And solvent, it is present in major amount. Present in major amount. Next is solute, which is present in minor amount. You may see different definition of solvent and solute. Some definition will also talk about the boiling point, solvent का ज़्यादा होता है, कम होता है, इस तरह की बातें. But all of these are subjective things. But in general, मोटा-मोटा क्या समझना है? Solvent is present in major amount. Solute is present in minor amount. Is this clear? Afaf and Rishita, yes or no? Yes, sir. It's clear. Yes, sir. ठीक है. तो रूह अफ़ज़ा जब बनाते हैं तो solvent क्या होता है? बताइए. रूह अफ़ज़ा में solvent क्या होता है? कैसे बनता है रूह अफ़ज़ा? अफाफ ने बनाया. अफाफ बताएंगे. अफाफ.
कैसे बनता है रूह अफ़ज़ा? How do you make रूह अफ़ज़ा? पानी में भी ठंडे पानी पानी में भी ऐड सम शुगर पहले एंड देन उसके बाद रूह अफ़ज़ा ऐड करते हैं। तो शुगर छोड़ देते हैं ना, शुगर छोड़ देते हैं, रूह अफ़ज़ा में ऐसे ही बहुत शुगर होता है, ठीक है। शुगर छोड़ तो वाटर प्लस ओनली रूह अफ़ज़ा, ठीक है। अब बताइए, तो यहाँ पे सॉल्वेंट कौन सा है, क्या लगता है आपको, विच इज इन मेजर अमाउंट, वाटर ज्यादा रहता है रूह अफ़ज़ा ज्यादा रहता है शरबत में? वाटर वाटर, तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट या सॉल्वेंट सल्यूट? सॉल्वेंट मतलब ए से डिनोट करेंगे, रूह अफ़ज़ा क्या हो गया, सॉल्यूट बी। रूह अफ़ज़ा इज गोइंग टू बी सल्यूट। क्लियर है ऋषिता? Yes, sir. ठीक है, जस्ट सेकंड, ओके। नाउ आई होप यू हैव रिटन दिस थिंग्स ऑन, है ना, सॉल्वेंट सल्यूट वगैरह लिख लिया होगा आपने। नाउ प्लीज लिसन, डोंट राइट एनीथिंग। यू मस्ट हैव टेस्टेड मेनी सॉल्यूशंस इन योर लाइफ, राइट? रूह अफ़ज़ा एक हो गया, है ना, रूह अफ़ज़ा। If you think about it, lime water is also going to be a solution, है ना? Then even for that matter, tea is going to be a solution, ठीक है? Now, whenever you are having a solution, जब कि आप कुछ टेस्ट करते हैं, तो रूह अफ़ज़ा में आप क्या बोलते हैं? मतलब अगर मान लीजिए चीनी आपने डाला है और मीठा कम है, तो फिर आप क्या बोलिएगा? चीनी कम है, राइट? अफाफ एंड रशिता, सही है? या फिर ज्यादा मीठा बन गया तो क्या बोलेंगे? ज्यादा मीठा बन गया तो क्या बोलेंगे? इफ इट इज अ बिट मोर, इफ इट इज अ बिट मोर स्वीट, सो क्या बोलेंगे? मीठा ज्यादा है ना? चाय में उसी तरह, चाय मीठी बन गई है, चाय फीकी बन गई है। दीज आर द थिंग्स वी यूज, राइट? अफाफ एंड ऋषिता, नाउ Yes, कैन sir. यू सी अ पैटर्न हियर कि हम लोग कभी ये नहीं बोलते पानी ज्यादा हो गया? डू वी एवर से दैट व्हाट पानी ज्यादा हो गया रूह अफ़ज़ा में? या फिर ये बोलते हैं कि रूह अफ़ज़ा कम हो गया है? वी ऑलवेज से कि रूह अफ़ज़ा थोड़ा टेस्ट में अगर नहीं ठीक लगता, क्वांटिटी में, क्वांटिटी की बात करेंगे तो बोलेंगे कि रूह अफ़ज़ा कम बना है पूरा का पूरा, है ना? But if I want to talk about the nature of a particular solution regarding their concentration, then we are going to talk only about the solute. Correct है दिशिता एंड अफाफ? क्या बोलते हैं? चीनी कम है, चाय पत्ती Yes, कम sir. है ना, चाय पत्ती तेज है, चाय पत्ती फीकी है, इस तरह से बात करते हैं। एंड वहीं से आता है कंसंट्रेशन टर्म्स, एंड कंसंट्रेशन टर्म्स दे मेनली डील विद द, they mainly deal with, एक पॉइंट लेंगे, concentration terms mainly deal with amount of solute in particular amount of solvent or solution, ठीक है, और solution. After this you will write number 1. ये थोड़ा सा पोर्शन मेरे से छूट गया, भूल गए हम तो। आप लिखिएगा आप नंबर 1 मास परसेंटेज, in bracket you will write W by W. Now what is mass percentage? Please write the formula. Mass percentage is equal to mass of solute divided by total mass of solution multiplied by 100, ठीक है? This is a very easy formula, but ये उतना ज्यादा यूज नहीं होगा. The important thing that you have to know about mass percentage is the one that I'm going to write here. Please. If 10 percentage bracket में W by W और 10 percentage by mass, है ना, इस तरह की वर्डिंग्स हो of aqueous NaCl, क्या दिया हुआ?
10% W/W और 10% by mass, इन दोनों में से कोई भी वर्डिंग चूज किया जा सकता है. Got it? Yes or no, please tell me, Afaf and Rishita. Of aqueous NaCl. Now, as soon as you see aqueous NaCl, what can you tell me? What is the solvent? What is the solute? Tell me. Solvent क्या है? What is the solvent here? Aqueous NaCl. Afaf, Rishita. जोर से बोल. अफाफ आप स्पेस बार मत यूज कीजिए, ठीक है ना? माइक को अच्छे से ऑन किया कीजिए. यू आर यूजिंग स्पेस बार, अफाफ. Yes, sir. स्पेस बार मत यूज कीजिए, नहीं अच्छे से आवाज आती है, ठीक है? टेल मी व्हाट इज सॉल्वेंट, अफाफ? Water. वाटर. देखो ऋषित, आपको दिखा था सॉल्वेंट वाटर है? Yes, sir. कैसे दिखा बताइए जरा. हमने तो नहीं दिया हुआ कहीं पे. आई डिड नॉट राइट वाटर. Sir, aqueous of हाँ NaCl is brine हाँ, ठीक ठीक. solution. चलो, aqueous है ना? aqueous means water. And what is the solute? NaCl. ऋषित, NaCl. very good. So this is a, इसको हम क्या बोलेंगे? This is a qualitative idea about the solution. कि qualitative मत क्या पूछते हैं, qualitative पूछते हैं ना, क्या क्या है. Now we are going to come to know about the quantitative analysis अगर करेंगे. So what we are going to see, please see here. As soon as you see 10%, you will write mass of the solute, WP. Please don't write anything and just listen. Leave your pens aside and please listen. If it is given 10% by mass, 10% W/W, then you will write WB is equal to 10 gram. Whatever the percentage, you will write that in gram. And then you will write mass of solution. And this mass of solution, if it is in percentages, then it is always going to, we are going to write it as 100 grams. Now, once you have got the mass of solute and mass of solution, you can tell me what will be the mass of solvent also. Tell me what will be the mass of solvent. Afaf and Rishita, tell me what will be the mass of solvent. Oh, नहीं दिख रहा है. Afaf and Rishita, can you see this or no? ये इतना समझ में आया आपको? अफाफ को दिख रहा है, बताइए कितना होगा अफाफ, मास ऑफ सॉल्वेंट? 10 gram. 10 gram mass of solvent I am asking. Afaf, solution is made up of two things. What are those two things? अरे बोलिए. Solvent and solute. Solvent and Solute. solute. Now, what is the mass of solute? 10 gram. Solution is 100 grams. Oh. Solution 100 grams है. Solute कितना है? 10 grams Mass है. of solvent is 90 grams. ठीक है. So this is 100. WA और WB कितना है? 10. अफाफ दिखा आपको that it is going to be 100 minus whatever the percentage is given, that percentage. Clear? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Clear. Okay. Now, so in general, what I can write? In general, I can write X percentage by mass or X percentage or X percentage W/W means mass of the solute will be equal to X grams. सही है? And mass of solution will always be equal to 100 grams. And mass of solvent, and mass of solvent will be equal to 100 minus X grams. Please note this down. Let me know once you're done. समझ में आया? रिश्ता एंड अफाफ कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं sir. No, sir. Sir.
Please let me know once you are done writing. सर हो गया. अफाफ आपका हो गया? सर हो गया, लिखिए. ठीक. Now write next. Mass percentage के बाद. Second is volume percentage. This is also given by V by B. Now in this you write X percentage V by V or X percentage by volume means, sorry, volume of solute is going to be X ml. Volume of the solute is going to be X ml. Volume of the solution is going to be 100 ml. And similarly, the volume of solvent is going to be how much? It is going to be 100 minus X ml. Done? Yes, sir, done. Right, next, third one. That was mass by volume percentage. Mass by volume percentage. What is mass by volume percentage? It is also given by W by V. So please write X percentage W by V means mass of the solute is equal to X gram. Okay. Then you have the volume of solution will be equal to 100 ml. Okay. And you cannot know what is the mass of the or volume of the solvent because we cannot do 100 minus X. I hope you have learned this in physics, dimensional analysis. When you are having A minus B, then we can do this only if the A and the B are having the same units. Is that right? Yes or no? Please tell me. Hannah? Yes, sir. So we cannot go like this. If you, let us suppose we have 10 percentage. अफाफ नहीं पढ़ा है? अफाफ डायमेंशनल एनालिसिस नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा है सर, डायमेंशनल. पढ़ा है आपने, ठीक है. 10 percentage W upon V. ठीक है. So I can write WB is equal to how much? 10 grams. And volume of solution is equal to how much? Volume of solution is going to be 100 ml. So can I write सर मैंने नहीं mass? पढ़ा है डायमेंशनल एनालिसिस. अच्छा आपने नहीं पढ़ा, ये पता है कि नहीं आपको कि अगर, अच्छा ठीक है, हम आपको एग्जांपल तो देख ही रहे थे, सुन लीजिए. So I cannot write anything here, no? अगर mass of solvent लिखना चाहिए, so 100 ml minus 10 ग्राम, ये हो ही नहीं सकता है. ये तो ऐसा हो गया ना, ml को हम x मान लें और 10 को हम क्या मान लें? y मान लें. तो 10x minus 100x minus 10y, कुछ कर सकते हैं इसको? नहीं सर. कुछ नहीं आएगा आंसर. ठीक है. So that is why we cannot have any information about the solvent. Okay, so these are only two information that is given. Wrote this down, yes or no? Please tell me. Then writing this down. Yes. Chaliye, right, next, fourth one. Molality, that is given by small m. Molality is given by small m. What is molality? Please write number of moles of solute, number of moles of solute per kg of solvent. So the formula will become small m is equal to number of moles is given by n. याद है आप लोग को? Number of moles is given by n. Now this subscript B is for solute, divided by
mass of solvent in kg. I want to talk about the unit. Unit is going to be equal to how much? Unit is going to be equal to moles per kg. Right? Or you can write mole kg inverse or mole per kg like this. Got it? Isano, please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Now let us look at number of moles. We have seen that number of moles is equal to how much? The given mass by molar mass. And both of this will be for the solute, correct? Yes or no, please tell me. So I can write this formula as molality is equal to the given mass of the solute divided by the molar mass of the solute multiplied to the mass of the solvent in kgs. Any problem? No, sir. Similarly, please see here. Now this is in kg, but generally आपको information grams में दिया है. So what you can write? Please see here. Don't write anything. WB divided by molar mass of the solute multiplied by WA. If I will write this in grams, अगर ये gram में है, so I have to divide this by 1000 in order to get in kg. So this 1000 will go above numerator. Denominator of denominator is numerator. Denominator of denominator is numerator, and you will get 1000 here. So the formula of molality becomes what? WB into 1000 divided by MB into WA. And you are going to learn this for the numericals. इसमें numericals में बहुत काम आएगा. Please write this down. Let me know once you're done. Please let me know once you're done. Yeah, I'm done, sir. Done. ना इसको प्लीज अच्छे से बॉक्स में कर लीजिएगा. ओके, राइट नेक्स्ट. The fourth one, right next, fifth one. Mole fraction. Mole fraction is given by X. It means this means mole fraction, and it is pronounced as chi. Now please write the ratio of number of moles of components, number of moles of a component, number of moles of a component to total number of moles of all components. What does this mean? In terms of formula, please see here, it is a ratio. Fraction है तो ratio होगा. So I will write, for example, if I have n number of components, है ना, आपके पास one component है, second component है, third component है, fourth component है, dot till n components. If you remember something from the 10th standard, this type of things you must have seen in the chapter arithmetic progression. देखा था आप लोगों ने इस तरह से n तक जाता है. Yes or no? Tell me. Afaf, Rishita. नहीं, पहले नहीं देखा ऐसे 1 2 3 4 dot n तक. अफाफ एंड ऋषिता नहीं देखा? जल्दी Yes, बताइए sir. ना. भाई देखा है ना? अफाफ आपने देखा इस तरह से. और उसमें फिर हम लोग कोई ith एलिमेंट लेते थे which is in between 1 to n. ठीक है, this is in अफाफ, are you there or you are not here? आपका माइक ही नहीं ऑन हो रहा है. Please see here guys, if I want to calculate the mole fraction of the ith component, then I will write chi of ith component is equal to number of moles of the ith component divided by number of moles of the ith component divided by the number of moles of the first component plus number of moles of the second component plus number of moles of the third component plus dot till number of moles of the nth component. Rishita, you got this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir.
ठीक है, लेकिन ये आपको याद नहीं रखना है। अफाफ चैट करनी है। अफाफ, यू कांट हियर मी? हेलो अफाफ, कैन यू हियर मी? कैन यू टर्न योर माइक? कैन यू टर्न योर, प्लीज रीजॉइन। आपको मेरी आवाज आ रही है ना रिशिता? हाँ सर, यस सर. No, please see. Now, as you know, we don't have to deal with n number of components. How many components we have to deal with? Tell me, Rishita. What type of solutions do we have to learn? Which type of solution? The I. अरे I नहीं. How many components? देखिए हमने लिखाया हुआ है. We have to learn what type of solutions which have only how many components? 4 x अरे number of 4 नहीं, x नहीं. अरे देखिए लिखाया है जैसे x b कुछ भी बोल रहा है. Look, solution definition solution के लिखाया है उसके बाद. रिश्ता को मिला नहीं मिला? two solutions, sir. Two solution है, two components. Two components. components है ना. रूअफ़ज़ा और पानी. रूअफ़ज़ा और पानी. Yes, sir. पानी. टू components है ना. चीनी नहीं डालना है. चीनी डालना है कि नहीं डालना है रिश्ता? चीनी डालनी है? नहीं सर. चीनी नहीं डालनी है. क्या? रूअफ़ज़ा और पानी. अफाफ, कैन यू हियर मी नाउ? Yes, sir. I can hear you. Okay, fine. So you will write this. बट ये फॉर्मूला आप यूज नहीं करेंगे कभी. दिस इज फॉर द डेफिनेशन. ये क्या डेफिनेशन है आपको अभी ना. आई मीन मेनी थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न हियर. सम फॉर्मूलाज आर द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट मोल फ्रैक्शन का. ये डेफिनेशन. व्हाट यू आर गोइंग टू यूज इज फॉर द बाइनरी सॉल्यूशन. प्लीज राइट फॉर बाइनरी सॉल्यूशंस, बिकॉज वी हैव टू लर्न ओनली बाइनरी सॉल्यूशन. फॉर एक बार कभी तो आपके टर्नरी आ जाएगा, 3 कंपोनेंट वाला आ जाएगा, 1-2 सवाल में कभी हो सकता है. ठीक है. इन जनरल व्हाट वी हैव टू लर्न बाइनरी सॉल्यूशन. प्लीज राइट फॉर बाइनरी सॉल्यूशंस we only have 2 mole fraction, chi A and chi B. Chi A will be equal to number of moles of A divided by number of moles of A plus number of moles of B, because these are the only 2 components and the total number of moles of all component मतलब क्या हो गया? Na plus Nb. Similarly for chi B what I will write? Nb divided by Na plus Nb. Now there is an important conclusion that we have to make here. If you are going to make the sum here, chi A plus chi B, this will be equal to, what is chi A? Please tell me, right guys? Afaf and Rishita, please leave your pen aside and tell me. Chi A is equal to Na plus Nb. अच्छा, chi B अफाफ बता देंगे. अफाफ बताइए chi B क्या है? अफाफ, what is chi B? Nb by NB plus A. Nb plus N है ना, तो Na plus Nb एक ही चीज. ओ माय बैड, ये हमने यहाँ पे B लिख दिया, ये Nb होगा. This will be Nb. Now we have fractions here. We have one fraction, we have the other fraction. दोनों में बताइए आप, डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड कर सकते हैं. Yes, ऐसा sir. नो है ना. तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेते हैं. Have Na plus Nb. Now here also I will get Na plus Nb. So Now one हो क्या जाएगा? जाएगा. 1 हो जाएगा. Correct. It will be equal to 1. So an important conclusion is that the sum of the mole fraction of all components, अगर 2 component है तो 2 component, 3 component है तो A plus B plus C, 4 है तो chi A plus chi B plus chi C, ठीक है, is equal to 1. But since you are going to learn majorly about 2 components, so chi A plus chi B is equal to 1. ये important conclusion आप याद रखें. ठीक है. And here we have the 2 formulas जो आपको याद रखना है, chi A और chi B. Number of moles of A divided by number of moles of A plus number of moles of B. Done? Yes or no? Please tell me. लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर. नेक्स्ट है आपके पास मोल फ्रैक्शन के पास 6. दैट इज द लास्ट वन. Sir, can you scroll up? जी श्योर.
Okay, sir. Done. Done, sir. Molarity, it is given by capital. This is number of moles of solute. Per liter of solution. So what I will write, capital M, it is equal to N for number of moles, B for solute, and B divided by volume of solution in liters. And what will be the units? The unit is going to be how much? Moles per liter. Now again, I am going to rearrange things here. P हो जाएगा क्या? NB को क्या लिख सकते हैं? W by B divided by MP. And this is given mass by molar mass. आपको number of moles मिल जाएगा. And if I am going to write volumes in ml, then I have to multiply this by 1000. This will be your molarity. जो पहला पार्ट है ना, that is the definition of molarity, है ना. फॉर्मूला आपका अगला वाला जो ज्यादा काम आने वाला उसी को फॉर्मूला बोलते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट जो है आपके पास, that is the definition. As you can see, I can derive that. जो पहला इक्वेशन है उसको हम लोग derive कर सकते हैं किससे? From the formula number of moles of solute per liter of solution divided by volume of solution in liters. Done writing this down? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Let us do some questions now. Give me a minute. Let me get some questions. स्कूल में हो गया था ये? Yes, sir. ये हो गया. हो गया. सवाल बन रहे थे? उसमें हमें बुक में एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स. अच्छा, एग्जाम्पल वाले बन रहे थे. एग्जाम्पल और थोड़े एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बन रहे थे. हाँ. बन रहे थे. ऋषिता, आपका अभी तो नहीं हुआ होगा ना, क्योंकि आपने तो अभी भी स्कूल स्टार्ट किया, राइट? सर हो गया, पर मैं नहीं थी. अच्छा, आप नहीं थे. अच्छा, क्या हो रहा है वैसे आपके स्कूल में अभी? स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑलमोस्ट हो गया सर. स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑलमोस्ट करा दिया उन लोगों ने. फिर अभी वेकेशन आएगा तो फिर हम लोग भी ट्रैक पे तो ऐसे आ ही जाएंगे, है ना? Yes, sir. But I have to learn it before 12th. Before 12th, why? वो मेरा टेस्ट है सर. अच्छा, टेस्ट है आपका. देखिए, ज्यादा ना अभी लोड मत लीजिएगा, हम तभी यही कहेंगे आपको. ठीक है, ऑल ऑफ यू गाइस, ज्यादा अभी लोड मत लीजिएगा. वेकेशंस इज द टाइम जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, प्लीज राइट दिस क्वेश्चन. एंड जनरली स्पीकिंग, देखिए आपको शायद 11th स्टैंडर्ड में स्कूल वाले नहीं थे, बट बोर्ड्स का आप जितना भी सवाल देखिएगा सब में मोलर मास दिया रहता है. ठीक है, सो यहाँ पे आपको NaOH है, मोलर मास ऑफ NaOH इज इक्वल टू, आप लोगों ने अपने नोटबुक में लिखा हुआ होगा, देखिए सर. इफ यू फ्लिप सम पेजेस, देयर आर फ्यू मोलर मास जो हम लिखवाई देते हैं. वाटर का हो गया, H2 का हो गया, CO2 का हो गया, H2SO4 हो गया, NH3 हो गया, NaOH उसमें से एक है. डू यू हैव दिस इन योर नोट्स? यस और नो? नहीं है क्या? आफाफ, ऋषिता, सर है ये notes में. नोट्स में कितना है बताइए, कितना है? पूरा आंसर. हाउ मच आफाफ? टोटल आंसर, फाइनल आंसर. हाँ, फाइनल आंसर बताइए. NaOH का मोलर मास कितना है? अरे आवाज नहीं आ रही, सिर्फ हल्ला हो रहा लग रहा है. चैट में बताइए. चैट, अरे बाप, चैट में बताइए. चैट में बताइए. ऋषिता सही है. आफाफ, आप बताइए चैट में, हाउ मच यू आर हैविंग?
आगे फॉर्मूले में प्लग इन करके कर लेंगी ऋषिता, टेल मी, यू हैव द फॉर्मूला ना, यू विल गेट द मोलारिटी, यस और नो? ठीक है, Yes, sir. फॉर्मूला में प्लग इन कीजिए, तुरंत आ जाएगा। अफाफ आपको तो आंसर ही नहीं आ रहा है। 40। अच्छा अफाफ ने डायरेक्ट, अच्छा फाइनल आंसर बता। अफाफ हम तो चाह रहे थे कि आप बताइए कि मोलर मास ऑफ NaOH क्या है। 40 ग्राम सर। नहीं आप नहीं बताना, ठीक है, आपने तो आंसर बता दिया। लेट, हाँ ऋषिता आंसर आए तो बताइएगा प्लीज। Yes, sir. 1 second. If you want you can write next question. Sir, मुझे 0.4 m आ रहा है. हाँ तो सही तो आ रहा है। Okay, sir. Calculate the, this is molality, ठीक है, molality of 40% aqueous NaOH solution by mass. How you have done this question? ये फॉर्मूला लगाया होगा आपने, सिंपल फॉर्मूला m is equal to WB. What is the WB? 4 grams. अच्छा एक और चीज हम आपको बताते हैं जरा। If you have not acquainted with this, then please you will read it like this. Please listen. Calculate the molarity of NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 grams. That means it is given mass of solute is 4 grams. In enough water to form 250 ml of solution. Volume of solution is equal to 250 ml. Then you will write molar mass of the solute MB is equal to 40. Then you will plug in them in the formula. Molarity is equal to WB is 4 grams into 1000 divided by MB, that is equal to 40 into 250. So you can cancel this 0 by this 0, this 0 by this 0, and you can cancel this 4 by this 4, and then you will get the answer as 5 2s and 5 5s, है ना? सही है? हाँ, sir. So get 2 by 5, which will be equal to 0.4 moles per liter, or you can write 0.4 m. Calculate the molality of 40% aqueous NaOH solution by mass. ये हो रहा है? सवाल आगे बढ़ा किसी से? अफाफ, ऋषिता, टेल मी, कुछ भी हुआ? Not yet, Not sir. हुई। अच्छा ठीक है, कीजिए 2 मिनट दे रहे हैं आप लोगों को, फिर हम सवाल करेंगे कितना हुआ, ठीक है? गिविंग गाइस 2 मिनट्स।
Okay, Afaf has got some answer. So let us see. Rishita, आपको कुछ आगे बढ़ा? नहीं बढ़ा. Rishita? Yes, sir. Yes, sir. I'm getting. Achha, doing it. Can you send me whatever you have done till now? Okay, sir. Rishita? 1 second, sir. Just send me now whatever you have done. Sir, I got the answer as 16.666, so I rounded it off to 16.67. ठीक है, चलता है. Very good, very good. So now I hope you can see how to solve numericals with only one number. And this is the first time. You will never get this in the 10th standard. How many numbers are there in the numeric? In the question, tell me how many numbers? Just one, sir. Just one. But देखिए, as I said in the first class, we will be learning about translations, right? This is one of the translation. 40% aqueous NaOH आपने translate किया किसने? WB is equal to 40 grams. WA is equal to 100 minus 40. That is equal to 60 grams. Then what did you do? You had now all the things. And what is the molar mass of NaOH, which is equal to still 40. And small m, the number of moles आपने ऐसे निकाला, ठीक है. कभी अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो उससे बस एक फायदा होगा कि फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको, ठीक है. सो m will be equal to WB into 1000 divided by MB into WA, and this will be in grams. WA क्या होगा grams. WB is equal to 40 into 1000 divided by MB is also equal to 40 into WA in grams is equal to how much? 60. So we'll cancel this, and then you'll cancel 10 and 10. 16. You have got 6. Just a second. So this is 16.67 moles per kg. Or you can also write this as 16.67 small. Please write this down, and then you will write a note. Please write X molal or X small m, and X is some number. Okay, here X is some number, means X is some number. X is some number. Means X moles of solute is present in 1000 grams of solvent. Okay. Similarly,
Similarly, if I have x molar, this is molar, or x with a capital N. Here also x is a number, means x moles of solute is present in 1000 ml of solution. 1000 ml का मतलब 1 लीटर. याद रहेगा ये सुनो प्लीज मी. Yes, sir. Moving on. Write another question. Calculate the molarity of 1 liter of water. ठीक है, ये सवाल हमको करने दीजिए. There is some conclusion that we have to make, और जो इस सवाल से जो आंसर आने वाला है, we have to remember that. Okay, please see. Don't write anything, just listen. Density of हाँ स्क्रोल अप कर सकते हैं, बिल्कुल लीजिए. Let me know once you're done. आराम से बैठे ना. Density of water is equal to 1 grams per ml. 1 ml लीजिए तो 1 ग्राम का बड़ा, 1 ग्राम लीजिए तो वो 1 ml का. ठीक है, that means if I multiply 1000 on the, ये आपने 1 ग्राम पर ml, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 ग्राम पर ml, एक ही चीज है. हाँ या ना? सेम थिंग राइट रशिता? अफाफ अरे हाँ ना, कुछ तो बोलिए भाई. थैंक यू. I'll multiply 1000 both the sides, ऊपर भी नीचे. 1000 ग्राम्स हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 1000 ml हो जाएगा, यानी कि 1000 ग्राम्स मतलब केजी 1 kg by हाँ केजी पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में मीनिंग 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 kg is equal to 1000 grams, is equal to how many grams? 1000 grams. 1000. Now what is molarity? Molarity है ना, molarity is equal to number of moles. तो क्या लिख सकते हैं? WB into 1000 divided by MB into volume of solution in liters. Every volume of solution in ml है ना, volume in ml. अभी तो ml हो जाएगा because here we have 1000. WB is equal to how much? 1000 into 1000 divided by molar mass of water is equal to how much? Tell me guys. Molar mass of water is equal to 18 grams into volume in ml is equal to, ये 1 लीटर है तो ये कितना जाएगा 1000. Yeah, so 1000 will cancel each other, and when you divide this you will get the answer as 55.55 m, or you can also write this as 55.55, 55.56. ठीक है, अब 55 लेना है या 56 लेना, वो आपके किस पे डिपेंड करेगा? न्यूमेरिकल के ऊपर. If you are having a number which is going to be getting cancelled by 55.55, तो आप 55.55 लेंगे. लेकिन अगर कोई इवन नंबर है 55.56 ले लेंगे. ओके अफाफ एंड रशिता, गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Got it. आंसर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, एंड द कंक्लूजन दैट यू हैव टू रिमेंबर इज नंबर ऑफ मोल्स in 1 kg or 1 liter of H2O is equal to 55.55 moles. ये याद कर लेना है. 1 kg पानी में कितना मोल? 55.55. 55.55. In 1 kg of water we have 55.55. Done? No, sir. 1 second. हाँ ठीक है, see you.
Yes, sir. Right, the next question. Calculate the mole fraction of H2SO4 in what should I take? 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 5m aqueous H2SO4. किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? H2SO4 का. इसमें 5 मोलल है ना. इन 5m का मतलब 5 मोलल हो गया. कोशिश कीजिए. आई एम गिविंग गाइस 2 मिनट्स. सर मुझे नहीं आ रहा है. नहीं आ रहा. आपको आ रहा है अफाफ? सर मैं कर रही हूँ. कर लूंगी. कहाँ तक कीजिए किए हैं? भेजिएगा Try. हमें अफाफ. ट्राई कर रही हूँ. ट्राई कर. देखिए इधर. इसमें भी एक नंबर है ना. केमिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहेगा. क्या रहेगा रिशिता? न्यूमेरिकल देंगे और कितना नंबर देंगे वो? हाउ मेनी नंबर्स? ओनली 1 नंबर. इस नंबर के अंदर कुछ और नंबर छुपा हुआ होगा ना. वी हैव सीन दैट 5m मीनिंग. क्या बताइए रिशिता? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5m? मींस नोट में लिखा है ना. हाँ सर. हाँ बताइए. छोटा m है मोलालिटी. Equals to NB by नहीं नहीं नहीं, नोट में लिखा है. मैं 2 न्यूमेरिकल्स के बाद हमने नोट लिखा था उसमें पढ़ी. okay. X molar or XM means X moles of solute is present in 1000 grams of 1000 5m means 5m is 5 moles of solute. 5 moles of H2SO4 is present in 1000 grams of water. इसमें हम इसकी मोलर मास दे देते हैं. H2SO4 का मोलर मास है 98 है ना. आई थिंक दिस विल बी इन योर नोटबुक. m is equal to 98. सर मैंने ओके.
अच्छा, Afaf, can you please send me a photo how you have done this on my WhatsApp? You have my WhatsApp number, Afaf? No sir, I don't have, like वो है लेकिन वो अब्बू के पास है। अच्छा, It's आप ये not देखिए, that. घर में कोई भी फोन है? कोई डाउट वाउट भी हो तो आप इसी में भेजिएगा, ठीक है? आई जस्ट वांट टू सी हाउ यू डू द न्यूमेरिकल्स। अब देखिए, H2SO4 हो गया। अब आपके पास क्या क्या चीजें हैं? यू हैव NB, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 5 मोल्स। और आपके पास क्या है? मास ऑफ सॉल्ट, WA कितना है बताइए? 1000 ग्राम्स, Yes, sir. है ना? एंड आपके पास MA कितना हो जाएगा? मास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर है 18 ग्राम्स, है ना? अच्छा, यहां से आपको पता है ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितना आ जाएगा? व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर? 5. 55.55 मोल्स। ठीक है, अब क्या निकालना है? काई बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4, काई बी इज इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB। NB. NB है आपके पास 5, अपॉन 60.55। इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है। आकाश, आपने ऐसे ही किया है? Yes sir. यू हैव डन दिस सिमिलर वे। Yeah, I did in the similar way. आपका आंसर कितना आ रहा है? I got 0.9. मैं आंसर नहीं जीरो। हाँ, आंसर पीछे जरा, 0.9 नहीं होगा आई थिंक। 0. देखिए, भेजिए भेजिए, आंसर भेजिए आप। ऋषिता, यहाँ तक लिख लिया आपने? ऋषिता, Yes, sir. फिर 5 अपॉन 60.55 लिख लिया आपने? हाँ सर। ठीक है, अब तुक्का मारिए, अब अप्रोक्सीमेट कीजिए, कैलकुलेट मत कीजिएगा कुछ भी, ठीक है? हाँ, छोड़िए मेंटली। 60.55 को अप्रोक्सीमेट करके 60 लिख सकते हैं? Yes, sir. 5 अपॉन 60 कितना हो जाएगा? 5 अपॉन 60 छोड़िए, 5 डिवाइड बाई 6 और डिवीजन में मल्टीप्लाइड बाई 10 भी है ना? 5/6 बता सकती है कितना हो जाएगा रिश्ता? 5/6 अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। कैन यू डिवाइड 5/6 इन योर हेड? सर 0.8 कुछ होगा। 0.8 होगा, और नीचे 10 बचा हुआ था। 10 बचा हुआ था ना रिशिता? 0.08। अब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखिए कितना आंसर आ रहा है। 0.083। अब आपको समझ में आया क्या करना है आपसे रिशिता? हाँ सर। ठीक है, अप्रोक्सीमेट करेंगे पहले, ठीक है, उसके बाद कैलकुलेटर यूज कर लेंगे। बिकॉज देखिए, टाइम, अब सोचिए ना, कैलकुलेशन हम करने के लिए नहीं कह रहे, क्या करना है आपका? अप्रोक्सीमेशन का जो स्किल है ना, वो बढ़ना चाहिए। कैलकुलेशन आप अब स्टैंडर्ड 6 में थोड़ी ना जो आपको कैलकुलेशन सिखाएंगे हम इसकी। बात समझ में आ रही है ऋषिता? यस सर। 11th और 12th में क्या सीखना है? अप्रोक्सीमेशन। अफाफ, आपका आंसर नहीं आया अभी तक। मेरा नंबर नहीं मिल रहा होगा आपको? मेरा नंबर मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है? अभी आपकी भेजना आवाज, है? हाँ अभी भेजना, और कब भेजना है? अभी भेजना है। अच्छा सॉरी। अभी तो हम देखेंगे कैसा लिखती हैं आप, किस तरह से लिखती है नोट्स, प्रेजेंटेशन कैसा है, आपको वो देखना है। और आपका आंसर सही नहीं आया, दिखा आपको अफाफ? यस सर। आपका आंसर सही नहीं आया। 0 पॉइंट, आपने 0.9 बोला हुआ है। The answer is 0.08। क्या गलती की आपने, देखिए जरा। अच्छा, पहले आप हमको भेजिए, बाद में गलती देखते रहिएगा आप, ठीक है? पहले आपने भेजी। ओके सर।
भेजा आपने अफाफ या नहीं भेजा? ओह माय गॉड। अरे एक सर मिनट दे रहे हैं भेज मामा। रहे, आपका नंबर भेज मिल रहे। रहा है। नंबर नहीं मिल रहा आपको? नंबर आप क्या कीजिए, आप अपने फादर को या फिर अपनी मदर को या फिर आपके पास कोई ऐसा चैट हो जिसमें आप खुद से बातें करती हैं, वहां पे आप नंबर लिखिए +917530998907 विद द प्लस साइन। डोंट रिमूव द प्लस साइन रहना चाहिए। आप जब वो नंबर को भेजिएगा व्हाट्सएप के किसी चैट में, वो नंबर ब्लू ब्लू अपेयर हो जाएगा। एंड्रॉइड में तो होता है, एप्पल ऐप में तो हमको नहीं पता क्या होगा, ब्लू होना चाहिए लेकिन। एंड देन उस ब्लू में क्लिक कीजिएगा, सो इट विल से चैट विद +917530। देन यू क्लिक ऑन दैट चैट, आप हमें सलाम भेज दीजिए, फिर बाद में ऐड टू कॉन्टैक्ट्स करते रहिएगा, ठीक है? समझ में आया आप कि नहीं आया? यस सर आया। आया। मिला आपको नंबर? मैंने भेजा है, फोटो भेजा भेजा। आपने? वाह, फोटो कहाँ भेजा? सलाम भेजा सर। फोटो आ रहा होगा। तो आ रहा है। हाँ, क्या गलती की इन्होंने? डब्ल्यू ए तो ले लिया आप, एन ए आपने गलती ले ली। देख क्या किया आपने? ओ माय गॉड। वन कैसे आया? नंबर ऑफ मोल मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/1 + 1/9 कैसे आया आपका? क्या क्या किया आपने? वेट ऑफ H2 इज इक्वल टू 2 ग्राम। 2 ग्राम कहाँ से आया? हाँ, हाइड्रोजन का आई मीन H2O में। नहीं है, समझ में नहीं आया क्या बोला आपने, साफ साफ बोलिए जरा। हाउ इज वेट ऑफ H2O 2 ग्राम? ये आपने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 98 ग्राम, तो वेट ऑफ H2O 2 ग्राम कर दिया आपने। नंबर ऑफ मोल्स इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, क्या लिखा है आपने? गलती समझ में आई कि नहीं आई? आप ये बताइए आप। यू गॉट योर मिस्टेक? I took wrong weight of H2O and number of moles of H2O is equal के गलत। अच्छा ठीक है, वो आप पूरा काटिए क्योंकि पूरा ही गलत लिखा है आपने। आप इसको इस तरह लिखिएगा पहले। 5m means 5 moles of H2SO4 in 1000 grams of H2O. The number of moles of solute is equal to how much? 5 moles. Mass of solvent is equal to 1000 gram. Molar mass of solvent is equal to 18 gram. Number of moles is equal to 5.5. Chi b is equal to इतना। ठीक है, जल्दी लिखिए जरा। 2 मिनट काट के लिखिएगा, बिल्कुल उसमें कुछ मत लिखिएगा, उसको पूरा काट लिखिए, ठीक है साफ? जी सर पूरा। ठीक है। वैसे तो ऐसा नहीं लगता आफाक बिल्कुल थकी हुई सी है? कैन यू सेंस सम टायर्डनेस इन हर वॉइस? हाँ सर थोड़ा सा। लगता है ना? क्यों आफाफ थकी हुई हैं आप? सॉरी सर, आपकी आवाज अरे थोड़ी सौ, ब्रेक। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है। हम पूछ रहे हैं, आर यू टायर्ड? नो सर नॉट टायर्ड। नॉट टायर्ड। अच्छा, आपकी आवाज से ऐसा लगता है कि आप थकी हुई हैं। हाँ सर, जी सर, ओके सर, ऐसा लगता है। थकी हुई नहीं है ना आप? पक्का? नहीं सर आई एम नॉट टायर्ड। ओके, वेरी गुड। जल्दी लिख लें तो बताइए, एक इम्पोर्टेंट सवाल कराना है। वैसे आप एक नोट लिख के यहाँ पे कंक्लूजन लिख सकते हो हैं। गया सर। हो गया? इस टाइम
for m molar. क्या मोलल? m molar. m molar means m moles of solute present in 1000 grams, है ना? For m molar aqueous solution, chi v will be equal to whatever the value of m is here divided by 55.55 plus m. ठीक है, शॉर्टकट. अगर आपके पास एक्वस है तो मोल फ्रैक्शन निकालने का बढ़िया तरीका. सीधा क्या कीजिए, वॉट एवर द नंबर इज गिवन. फॉर एग्जाम्पल आपको दिया रहे 2 मोलर एक्वस NaOH. क्या करेंगे? एंड कैलकुलेट NX टाइमिंग. of N क्या आ जाएगा? 2 डिवाइड बाई 55.5 55 प्लस 2. plus ठीक है, डिवाइड बाई 57.55. अप्रोक्सीमेट करेंगे इसको, बताइए. अप्रोक्सीमेट करेंगे. yes 57.55 को क्या लिख लें? 70 60 सॉरी 60 के करीब. 60 अफाफ कितना अभी अजान हुई है? अफाफ कब हुई अजान? बस 5 मिनट और. टाइम पार हो जाएगा क्या? आप ना पहले बता दिया कीजिए, ठीक है? जब मगरिब की अजान हो ना उसी टाइम बता दिया कीजिए, तो हम उस टाइम आपको थोड़ा सा छोड़ देंगे. बस 5 मिनट बचा हुआ है क्लास का, है ना अफाफ? ओके सर. ठीक है, बस 5 मिनट. अप्रोक्सीमेट करेंगे ऋषिता जल्दी. 2/6 yes 2 by 6 2/60 2/6 0.3 0.33 है ना? कितना आ रहा है देखिए. तो by 10 होगा 0.03 57.55 0.34 आ रहा है, और यहाँ पे आपको आंसर है 0.33, है ना? ठीक ठाक yes sir है ना? ठीक ठाक है. तो इसी तरह से करते रहेंगे तो जल्दी कैलकुलेशन काफी फास्ट हो जाएगा आपको. चलिए नेक्स्ट लिखिए एक सवाल. Density of 3 molar NaCl is 1.25 gram. Calculate the molality of the solution. यहाँ पे देख लीजिए, molar mass of NaCl is equal to 58.5. You have to calculate molality. Done? Yes or no? Please tell me. Both of you have done. Written the yes question. sir. ठीक है, please see it. First of all, I will write this and translate this. 3m means, बताइए. What is the meaning of 3m? 3 moles of NaCl 3 moles of NaCl present in um one sec. Sir 1000 milliliters of a solution 1000 ml ml of of a solution. solution. ठीक है, so please see what you have got. NB is equal to 3 moles. Then we have got what? We have also got volume of the solution is equal to 1000 ml. Now we have the density also, that is equal to 1.25 grams per ml. So what we can get from here? From here we can get the mass of the solution. Mass of the solution will be equal to how much? 1000 into density, no? 1000 into 1.25. What is density? It is equal to mass by volume. So mass will be equal to density into volume. This will be equal to 1250 grams. Clear? Yes or no? Please tell me. Yes sir. Any problem?
ये m आपका नहीं लिखते, इसको हम ना w लिखते हैं, ठीक है, बिकॉज m फिर आपको मिस्टेक हो जाएगा n भी। अच्छा, फ्रॉम हियर कैन वी टेल द दिस इज w ऑफ द सोल्यूशन, कैन वी टेल द w ऑफ b? अगर आपको याद हो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, so given mass will be equal to number of moles into the molar mass. Wb will be equal to 3 into 58.5. 5 3s are 50, 8 3s are 24 and 25, and 5 3s are 15, 16, 17, and 1 decimal point 7 175.5 grams. ठीक है. Now can you tell me what is the mass of solvent? It will be mass of solution minus mass of solute. which will be equal to 1250 minus 175.5, and this will be in grams. कितना आ जाएगा बताइए? 0.5, and here 50 and 75 is there, so 50 and 75. It will be 1074 होगा plus 0.5, 1074.5 grams. देखिए तो चेक कीजिए, सेम है. Yes, sir. ठीक. Now what we have got everything. Molality is equal to number of moles of solute divided by number of moles of solute divided by mass of solvent. आपके पास किसमें ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना. Number of moles is equal to 3 into 1000 divided by 1074.5. Done? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. अफाफ आपने लिख लिया? और ना दो फॉर्मूले ऐसे जो हम आपको अभी सिर्फ लिखा दे रहे हैं, ठीक है. मोलैरिटी मिक्सिंग, in this what we are going to do, we are going to have two solution. एक A solution है और एक आपके पास B solution है ना. A B मतलब 1 2 कर देते हैं इसको. फर्स्ट solution because A and B are solvent and solute, 1 और ये 2, ठीक है. दोनों में सेम किस्म के solute, and then I am going to mix them together. So if you see number of moles is, if I see here, molarity is equal to number of moles divided by volume. Number of moles will be equal to molarity into volume, right? So in the first solution, I can write the number of moles as m1 into v1, and number of second के लिए क्या लिख देंगे m2 into, और थर्ड के लिए क्या हो जाएगा? थर्ड के लिए it will be nb in the first, ये आपका nb1 है, number of moles in the first container, number of moles in the second solution. थर्ड में जब ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स प्लस इन द फर्स्ट प्लस नंबर ऑफ मोल्स इन द सेकंड. फॉर एग्जांपल, इन द फर्स्ट केस वी आर गोइंग टू हैव 1 glass of water and 1 spoon of sugar. Second में we are having 2 glass of water and we are having 3 spoons of sugar. When we are going to mix them, we are going to have how many? We are going to have 3 spoons है ना of sugar. वही NB1 plus NB2. So when you write NB1 plus NB2, और ये आपके पास क्या है? This is MR, resultant solution का molarity and volume. Now please see, I can say that this MRVR is equal to NB1 plus NB2, है ना. तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? Number of moles of the resultant solution will be equal to number of moles in the first solution plus number of moles in the second solution. Now, number of moles in the resultant solution will be equal to MRVR, which will be equal to NB1, which is M1V1 plus M2V2.
Now that is why I can write MR will be equal to M1 V1 plus M2 V2 divided by VR. Here VR will be equal to V1 plus V2. Because when we are having 1 glass of water and then 2 glass of water, the sum is going to be 3 glass of water. ओके ना एक और है छोटा सा फॉर्मूला, उसको लिख लीजिए। एक सेकंड हम इसको समझाएंगे अगली क्लास में, ध्यान दिला दीजिएगा बस, ठीक है। दिस इज डाइल्यूशन फॉर्मूला। So we have a solution like this and we are going to dilute it. That means add water or any other solvent. In the first case, we are only adding water. So the number of moles here and the number of moles here is not going to change. Number of moles in this case is equal to M1V1 starting में, और बाद में क्या हो जाता है M2V2. Since we are adding water, तो volume भी change होगा, molarity भी change होगा, but number of moles is not changing. So we can use what? We can say that number of moles are not changing. That is why M1V1 is equal to M2V2, and M2 will be equal to how much? M2 will be equal to M1 V1 divided by V2. What is V2? V2 is equal to V1 plus added volume of solvent. ठीक है, 3 मिनट एक्स्ट्रा लिया है हमने, माय बैड, इसको जरा लिख लीजिए, ठीक है। यू हैव आल्सो टेस्ट भी होता है लेकिन आपका तो ठीक है, मैम है आपको बता देंगे टेस्ट किस तरह से देना है, अभी ऐप में देना होगा टेस्ट आपको, ठीक है। सो मे बी आप थोड़ा सा सुन लीजिएगा आप, उसके बाद आप नमाज पढ़ने चले जाइएगा, उसके बाद फिर आप टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है। आपके ऐप में होगा टेस्ट। बोथ ऑफ यू रोट दिस डाउन, यस और नो प्लीज टेल मी। अफाफ एंड रशिता लिख लिया आप लोगों ने? Sir, I wrote it. चलिए just a second, stop sharing my screen.